Today we are having a class on Kuch-Kaho book, and the students will be giving out summaries of the stories that they have prepared. Please Namo Arihantam Namo Siddham Namo Ariyanam Namo Vachayanam Namo Loke Okay, so today's class we are going to start with, I think I have the audio for Priyaji, and she's going to do the first and the second story, and let's take a listen to her. Here we go. 1 second. Is Prabha ma'am not joining, Hemalji? Today Prabhaji is not going to be there. She's at her son's wedding in Mexico. Oh, okay. Awesome. Yeah. So we are just going to do this as a self-study thing today, and whoever attends gets to hear whatever their peers have done from this group. So That's an awesome session today. yeah, because this is self-study, you can use these, take your notes and use this to make it as your little summary and things like that. So, Right. Okay. Okay, 1 second. I'm going to start with Priyaji's, okay? Here we go. जय जिनेंद्र सभी को। आज हम हुक्मीचंद जी बारेल जी की आप कुछ भी कहो जो सेल्फ स्टडी की किताब है, हम उस पे समरी कर रहे हैं। जैसे मैं आज पहली और दूसरी स्टोरीज पे कर रही हूँ। ये स्टार्ट होने से पहले हुक्मीचंद जी बारेल जी ने एक छोटा सा स्टेटमेंट देते हुए ये कहानियों को स्टार्ट करा है। वो इन कहानियों के थ्रू सबको ये बताना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं कि विनय के बिना तो विद्या प्राप्त होती ही नहीं है, पर विवेक और प्रतिभा भी अनिवार्य है। इसके बिना भी विद्यार्जन असंभव है और गुरु के प्रति अडिग आस्था का भी महत्वपूर्ण स्थान है, पर वह आतंक की सीमा तक ना पहुंचना चाहिए, अन्यथा वह विवेक को कठिनता कर देगी। यद्यपि विवेक का स्थान सर्वोपरि है, किंतु वह विनय और मर्यादा को भंग करने वाला नहीं होना चाहिए। विवेक के नाम पर कुछ भी कर डालना महापाप होगा। इस प्रकार काफी चीजों के बारे में उन्होंने एक छोटे छोटे से स्टोरीज के थ्रू उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे गुरु है तो विवेक होने से क्या होता है और वो कितना रखना चाहिए, तो उसके बारे में हम आगे स्टोरीज में जानेंगे। पहले स्टोरी है आप कुछ भी कहो। इसमें आके कैरेक्टर्स है, एक तो राजा श्रेष्ठी का एक कैरेक्टर है और इसमें एक मुनिराज है। इसमें मुनिराज एक ध्यान में बैठे हैं, तब वो राजा श्रेष्ठी आके उन्हें नमोस्तु बोलता है। तब उनकी ध्वनि सुनकर महाराज जी का वो तब ध्यान उनका भंग होता है। तब महाराज जी उनके चेहरे पे देखते हैं, कुछ एक अजीब सी व्याकुलता रहती है उनके चेहरे पे। तब वो पूछते हैं उनसे कि क्या हुआ, आप इतने व्याकुल क्यों हो। तब वो श्रावक बताते हैं कि आप इतने बड़े मुनि हो, आप इतने बड़े तपस्वी हो, फिर आपके शरीर में इतने कोड़े हो रहे हैं। उनको कोई चीज का स्किन डिसीज होता है, उससे उनके शरीर पे पूरे जैसे देयर आर सो मेनी मार्क्स ऑन देयर स्किन, और वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। वो चीज देख के वो श्रावक को नहीं अच्छा लगता। उनको लगता है कि आप कुछ करते क्यों नहीं हो, आप कुछ दवाई वगैरह क्यों मेडिसिन नहीं लगवाते हो। तब मुनि बोलते हैं कि वो मुस्कुराते हुए बोलते कि किसी का चाहा कुछ भी नहीं होता, उसी भव में मोक्ष जाने वाला सनत कुमार चक्रवर्ती को भी मुनि अवस्था में 700 वर्ष तक यह
कुष्ठ यादी रही थी, तो हमारी क्या बात है। वो बोलते हैं कि वो एक एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि संत कुमार चक्रवर्ती थे, फिर भी वो मुनि अवस्था में 700 वर्ष तक इस कुष्ठ रोग से उन्हें वो फेस करना पड़ा। तो मैं तो बस एक मुनि हूँ, वो चक्रवर्ती होते हुए भी उनको हुआ, तो मैं कौन हूँ जो कुछ करूं या कुछ ना करूं। फिर दूसरे आगे बताते हैं मुनि, इसने क्या बिगाड़ा है हमारा जो हम इसका अभाव चाहने लगे। हमने कुछ चाहने के लिए घर नहीं छोड़ा, चाहना छोड़ने के लिए ही तो हम दिगंबर हुए हैं। हमें इस विकल्प में ना उलझाओ। वो बताते कि हमें इस दर्द में, इस डिसीज से हमें कुछ भी व्याकुलता नहीं हो रही है, तो हम उसके बारे में क्यों सोचे। हम इस चीजों में उलझना नहीं चाहते हैं, तभी हमने दिगंबर वेश अपनाया है। फिर आगे बोलते हैं कि शास्त्रों में ठीक ही कहा है कि गृहस्थों के अधिक संगति ठीक नहीं है, वे व्यर्थी बातों में ही उलझते हैं, उनसे अंतर की प्रेरणा मिलना तो संभव ही नहीं है। मतलब वो श्रावक को बताते हैं कि अगर हम श्रावकों के साथ रहेंगे तो ये चीजें रहेगी, इसीलिए हम गृहस्थों से दूर रहते हैं, ताकि हम अपने तप में, अपने आत्मा की लीनता में ज्यादा ध्यान दें, ऐसी चीजों पे नहीं। फिर भी आगे जब मुनि उनको, उस श्रावक को देखते तो फिर भी उनका चेहरा उदास रहता है। तब मुनि उनको पूछते हैं कि एक्चुअली चीज क्या है, क्या चीज आपको इतनी बॉदर कर रही है। तब वो बताते हैं एक्चुअल इंसिडेंट ऐसा होता है कि मुनि, हमारे गांव में एक पंचायत हुई थी। उस पंचायत में दूसरे धर्म के लोग हमारे, मतलब अपने दिगंबर मुनियों पे वो हंस रहे थे। वो बता रहे थे कि ये कैसे तपस्वी है, ये कैसे साधु है जो अपने खुद के स्किन डिसीज, खुद के कोड़ों को वो ठीक नहीं कर सकते, तो वो लोगों का कल्याण क्या करेंगे। तो हमें वो अच्छा नहीं लगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम आपका ये जो भी रोग है, कुछ रोग है, वो आपका ठीक हो जाए, तो प्लीज आप हमें वो चीज करने दीजिए। तो फिर मुनि बोलते हैं कि दिगंबर धर्म आत्मा का धर्म है, शरीर का नहीं। शरीर के विकृत होने से दिगंबर धर्म का अपमान कैसे हो सकता है। फिर वो उस श्रावक को समझाते हैं, बताते हैं, श्रेष्ठी वीर, इतना धर्मानुरोग भी ठीक नहीं है। उसके आवेग में आप सत्य को भी ध्यान ना रखे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी भला बुरा नहीं कर सकता। यह दिगंबर धर्म का अपमान नहीं, सर्वोत्कृष्ट सम्मान है, क्योंकि वास्तव रूप यानी वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। यह जन जन की ही नहीं बल्कि कण कण की स्वतंत्रता सत्ता का महान संघोष है। फिर ये बात सुनकर वो श्रावक वहां से चले जाते हैं। फिर मुनि अपने वापस ध्यान में लीन हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद नगर के काफी श्रावक उनके दर्शन के लिए आते हैं। तब मुनि एक छोटे से केव में, वो अपने ध्यान में, गुफा में लीन रहते, गुफा में अपने ध्यान में लीन रहते हैं। जब श्रावकों की आवाज सुनकर उनका वो भंग होता है, उनकी लीनता भंग होती है, तब वो बाहर आके देखते हैं। तब देखते हैं कि वहां श्रावकों की भीड़ होती है। श्रावकों की भीड़ ने उस टाइम पे उस मुनि को देखते हैं कि उस मुनि के जो शरीर में जो डिसीज था वो सब चला गया था, सब ठीक हो गया था। तब वो श्रावक सब बहुत खुश हो गए और सब जय जयकार करने लगे और उनको पूछने लगे कि ये चमत्कार कैसे हुआ, ये चमत्कार आपने कैसे करा। तब महाराज उनको बताते हैं कि सभी आत्मा स्वयं परमात्मा है, परमात्मा कोई अलग नहीं होता। स्वभाव से तो सभी आत्माएं स्वयं परमात्मा ही है, पर अपने परमात्मा स्वभाव को भूल जाने के कारण दीनहीन बनी रहती है। जो आपने को जानता है, पहचानता है और अपने में ही जम जाते हैं, रम जाते हैं, समा जाते हैं, वह पर्याय में भी
परमात्मा बन जाते हैं। फिर वो समझाते हैं कि यह मैंने कुछ भी नहीं करा, यह सब अपने स्वयं कर्मों से वो मेरा आया और अपने मेरे कर्म से ही वो सब चला गया। फिर वो बताते हैं कि उनकी जो लास्ट फिंगर जो होती है, स्मॉल फिंगर, उसमें अभी भी रहता है थोड़ा सा वो डिजीज का। फिर वो बताते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं करा, देखो अभी भी मेरे शरीर में ये चीज है। तो फिर यही समझाने की प्रयास करते हैं कि हम कोई नहीं है कि हम कोई चीज को कुछ कर सकते हैं। सारे द्रव्य सब अपने अपने परे हैं, कोई भी द्रव्य किसी भी द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। इतना सब कुछ समझाने के बाद भी वहां का एक श्रावक यही बोलता है, आप चाहे कुछ भी कहो महाराज, हम तो इसे अपना एक चमत्कार ही मानेंगे। फिर लास्ट में इस स्टोरी का मॉरल यही होता है कि कोई भी किसी का मुनि होके भी, जैसे पार्श्वनाथ भगवान तीर्थंकर उनका लिखा हुआ था, फिर भी उन पे इतने उपसर्ग हुए, इतना कुछ हुआ, कोई भी कुछ भी नहीं कर सका। भगवान खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कोई भी द्रव्य किसी भी द्रव्य पे कभी कोई हानि नहीं कर सकता है। तो सब कुछ क्रमबद्ध होता है जो हमें वो फेस करना पड़ता है। तो दिस इज द स्मॉल मॉरल ऑफ दिस स्टोरी। फिर मैं सेकेंड स्टोरी है अक्षमय अपराध। Does anybody want to just give one line summary of what they thought was important and what Priyaji said about this story? Shikhaji, if you want to start. Sure. So basically, Priyaji was saying that don't bother about too much if you have some disease, or don't keep thinking about it. It is happening with due course of time. It will automatically go away because everything has is involved into क्रमबद्ध पर्याय, सब कुछ आएगा और automatically अपने आप चला जाएगा. That's the gist of the story. Very nice. What did you take away from this, Tulika ji? उन्होंने एक सेंटेंस, इसका मतलब मर्म यही रहेगा कि रिलीजन को अगर हम लोग अपने रेस्पेक्ट करते हैं और उसमें हमारा अनुराग है, तो इस चक्कर में हम लोग उसकी जो सत्यता और वो जिस बेसिस पे वो है हमारे आधार, उसको ना भूले। तो अगर बोलते हैं कि जैन धर्म आत्मा का धर्म है, तो उसे वहीं तक टू द पॉइंट फॉलो करना, इसलिए नहीं कि अनुराग में या रेस्पेक्ट करते हैं तो बहकर गलत कर ले, और जो चीज कर्मबद्ध पर्याय से है तो भी उसको मैजिक मान ले। Very nice, very nice. Binduji, did anything strike you as interesting in the story? I think that Shika ji and Tulika ji mentioned disease will come and go, but you do what is right. Don't fall too much for it. Everything will come into place when it has to, when it is the time. So I think this story is just to focus about the reality of क्रमबद्ध पर्याय. Has to have it has to happen, so it happened. Now let it go. Don't just think about it. And I think it's not about just disease, but whatever happens, if you are fighting with your husband, just think, oh, it has to happen, and just let it go. I think it should be taken that way. Yeah, what I am hearing is that कर्म का उदय होता है, कर्म के उदय के हिसाब से जो विपत्ति या भोग मिलता है, एंड देन जब कर्म का उदय खत्म हो जाता है तो वो भी चला जाता है अपने टाइम में. So there is no and also there is nothing to do, because I am Atma, there is nothing to do in this. I can only do my Atma ka kaam, which is be a Gyayak Swabhav. I cannot interfere in the workings and parinaman of a different dravya, which is Pudgal dravya in this case. So there is no point doing charcha about it, because it's not what I control. If I truly believe I'm Atma and he truly believes that. You know, in the Sanat Kumar story, the same thing had happened, where the king came and asked Sanat Kumar Maharaj, like, you know, your body is covered with lesions of leprosy, you know, and you're doing nothing about it. And he said that I don't
the same thing what this Maharaj was saying, it is a paryay of the body. It has nothing to do with who I am, which is Atma. And he says, but how come you are so powerful and you're able to do nothing? So then he touches his own hand, and his lesions from that hand, they go away, because he has that special riddhi. You know, as a Maharaj, they have, I mean, Munis, some Munis have a lot of riddhis, and he clears all his lesions. And only on that one arm, the rest of the body is still there. And he says, I can do this, but this is not where I want to spend my time. I want to spend my time in my Atma. It is the choice I have made. This is not important, kind of thing. So just interesting. It's good to hear people's ideas, what they heard, because everybody hears different things in the stories. So That Hemalji, even I would like to add that yes. as Prabhaji on mentioning that कर्तृत्व बुद्धि, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, you know, अपनी health के लिए whatsoever, but nothing's there in your hand basically. जब जो होना है वही होगा. And that's what, as Shravak, they came up and they were like, ये चमत्कार कैसे हुआ? There is no such thing as चमत्कार, only क्रमबद्ध पर्याय, and जो पर्याय जब जिस समय होनी है. We cannot interfere, and everything works as it is. Yes, I liked what Tulika ji also said about the dharma and the remembering the siddhants and living by the siddhants, basically. I think all these were important. We can carry on with the next chapter. Let's see what she has to say. ये अक्षमय अपराध एक मुनि और उनके शिष्य के बारे में है. इसमें यह होता है कि मुनि जो मुनिराज ऋतुसागर होते हैं, वो आके अपने संग के सारे शिष्यों को मौन होने का आदेश देते हैं. तब उसमें एक मुनि कुछ व्यवस्था या कुछ कारण से वो उस टाइम पे उस संघ में शामिल नहीं होते हैं, तो उन्हें इस चीज के बारे में उनको पता नहीं रहता है कि महाराज ने आके मौन दिया है. जब वो नगर से होते हुए संघ की तरफ आने लगते हैं, तब वहां पे एक पेड़ के नीचे मंत्रियों से उनका वाद विवाद हो जाता है. उस वाद विवाद में वो मुनि आके कुछ ऐसे शब्द बोलने में आ जाता है जो एक मुनि के अवस्था में नहीं बोलना चाहिए. जैसे उन्होंने धर्म के हिसाब से, दिगंबर मुनियों के हिसाब से उन्होंने कुछ कहा, तब उस मुनिराज के शिष्य ने वाद विवाद में कुछ कह देते हैं. फिर जब ये चीज ऋतुसागर जी महाराज को पता चलती है, तब उनके अंदर एक अजीब सी गंभीरता आ जाती है. फिर जब उस शिष्य को पता चलता है कि मुनि ने आके सबको मौन व्रत दिया था और मैंने ये सब बोल दिया, ये जो गलत था, तो वो जाके मुनि से माफी मांगते हैं और वो प्रायश्चित के लिए बोलते हैं. तब मुनि उनको बताते हैं, मुनि ऋतुसागर जी बताते हैं कि आपको तो चीज पता ही नहीं थी कि हमने मौन दिया था, लेकिन फिर भी आपने जो कहा वो एक मुनि अवस्था में नहीं कहना चाहिए था. लेकिन फिर भी आप इतने ज्ञानी हो, आपने धर्म की रक्षा, दिगंबर की वो सही चीज बताने के इसमें कहा है, तो मैं आपको कोई कठिन सजा नहीं दे सकता. तब वो शिष्य बताते हैं कि नहीं महाराज, साधु की ऋतु के सागर से संयम का सागर होना अधिक आवश्यक है. वो बताते हैं कि मैं एक मुनि हूँ, तो मैं एक साधु हूं, तो मुझे आके संयम में रहना चाहिए था, तो ये विवेक होना चाहिए था. राग चलते लोगों के व्यर्थ विवाद में मैं उलझ गया, तो आप आके मुझे इस चीज का प्रायश्चित दीजिए. तब वह बताते हैं कि आपने पर को जीत चुके हो, अब आप अपने आप को जीतो, आप अपनी आत्मा की लीनता में जाओ और यही आपका प्रायश्चित होगा करके मुनि ने उनको यही प्रायश्चित दे के उनको उनसे दूर जंगल में भेज देते हैं. तो इसमें यही होता है कि मुनि अवस्था में होते हुए भी चाहे कोई वाद विवाद हो, कुछ भी हो, मुनि को उनके संयम का, विवेक का वो चीज या वो कैरेक्टर वो नहीं भूलना चाहिए. बस यही मॉरल है. सो आई थिंक एवरीवन वुड हैव गॉट द थिंग. थैंक यू. जय जिनेंद्र सभी को. आज मैं आप कुछ पे कहो
it automatically went on to the next one. Anybody had any comments that they want to share? I have one to say. This story reminded me of the Raksha Bandhan story, in which Yeah, I was thinking the same. Yeah. Sagar Muni also didn't know that Mount Rakha hai, and then he did Vad Vivad with the Ragi ministers, and then he was asked to go and do penance in the same place where he did Vad Vivad with the ministers. So it reminds me of that. But anybody else who has something to add, what they found interesting in this story? Tulika ji, Shikha ji, Bindu ji, Dolly ji. I think it's the same story like you mentioned, other than you couldn't notice any. Okay. Jambu Swami was called, or Jambu Swami, not. This is the Raksha Bandhan story. Okay. Acharya Akampa and his Yes. Sagar and his 700 munis and Minister Bali की story है. आप बोलना चाहते हैं कुछ शिखा जी? ये इम्पोर्टेंस ऑफ संयम ही बता रही है ये स्टोरी. हाँ. तो मुझे लग रहा है कि what to choose, hybrid You water. know, I can't hear you clearly. Sorry to interrupt. Now? हाँ, yes, better. अच्छा, एक्चुअली ये संयम की इम्पोर्टेंस को बताया कि कुछ भी हो जाए, अगर आप मौन में बैठे हो तो मौन में ही रहो. अगर आपके गुरु ने आदेश दिया है या तुम नमोकार मंत्र बोल के भी मौन में बैठे हो तो उसी में रहो. बट कल मेरे साथ ही एक इंसिडेंट हुआ, मैं इसलिए बताना चाहती हूँ. मेरी हैबिट है, मैं आफ्टर टेकिंग शावर आई ऑलवेज डू अ माला जाप ऑफ नमोकार मंत्र. ठीक है, आई वाज डूइंग दैट एंड माय डॉटर वाज प्लेइंग and I like just did 9 or 10 namokar mantra and she started crying very hard, very loudly. So I call I don't know what my husband was doing. He was not listening. Then I stopped the jab and मैंने बोला कि सुनो क्या बोल रही है, रो क्यों रही है, उसको देखो. And then he ran and then we saw blood coming out of her ear. तो फिर मैंने बोला कि क्या हो गया. फिर मैंने एकदम से वो रखा, पर मैंने मन में सोचा कि चलो आज यही होना था, मुझे नहीं जाप कंप्लीट करना था. तो मैंने फिर उसको देखा वगैरह, ठीक है, उसने कान में कुछ डाल लिया था तो उसको ब्लड आने लगा था. बट ऐसा भी हो जाता है कि संयम. अब मुझे माला जाप करनी थी तो that should be my priority, but nothing was in my hand. Right. Hmm. Very interesting. This is about Sayyam. बट कैसे संयम फॉलो करे, राइट? वो Yeah, तो yeah, रही है, ब्लड आ रहा है, तो मैंने सोचा इमरजेंसी में जाना है, क्या करना है, अभी तो छोड़ना ही पड़ेगा. true. I think we are in the Grahastha state and we are not in the Shravak state even. So as a Grahastha, I think what the response is appropriate response, because you're the adult responsible for this child. And as long as you go back and finish your intention, right? ये सब होने के बाद you go back and do your mala. It doesn't matter if you did it absolutely after your bath or you did it 1 hour later. Like, you know, to me, in my mind, I would think I'm just going to go back and I'll come back and finish this. I have to address this other problem, and please forgive me. And you're asking forgiveness of yourself only, because this is for your Atma. So you're telling your Atma only, I'm sorry, but I got to take a break and I'll come back, kind of thing. You know, I don't know. That's the way I do these things. Like, Unfortunately, after that, I did not get time. And okay. So you can make it up by doing 2 of them today. I think there is nobody who's Yeah. like sitting with a danda and saying Saturday nahi kiya, abhi, takleef hogi. Aap hi apna, you're self-adjusting things yourself. But as long as we are not making excuses all the time, iski wajah se ye nahi kiya, uski wajah se wo nahi hua, ye nahi karte, wo nahi, then you're not in Sanyam basically. When you're not in Sanyam, I think to me it means that अपने आत्मा का respect नहीं हो रहा है. But if this, for something what you described, Shikha, for me, I feel it's simpler. But if this is something that you do all the time, then there is a problem. Then you're not being respectful yet of your Atma. And that too, growth mindset. Abhi nahi ho raha hai, jab bhi hoga, tabhi hoga. Like, you know, it will come when it comes, kind of thing. glad But I discussed this
with you. You gave me idea to do 2 job today. Yeah, Thank that you. is it is your own penance for your own whatever, Yeah. you know, like how he got a penance. It wasn't like his Maharaj said, now leave the Sangh and you cannot join us because you did this. He's just saying, go do something else to make up for your misbehavior. And that's how we learn, right? That we have to fix some problems by ourselves. I am consistently eating at night time. Then I have to think about it. This is against Bhagwan's Agya. So I want to do something along Bhagwan's Agya. So then I have to make effort. And so, like last, you know, all these days I was eating at 6:30. Last night I completely forgot. And I ate dinner at 7 o'clock. We finished at 7:30. And after I finished, oh my God, I ate after sunset. So संयम नहीं रहा कल रात के लिए, बिकॉज डॉटर बोल रही है मुझे पिक्चर देखना है, आधा घंटा तो पिक्चर ढूंढने में गया, फिर आधा घंटा वो खाना आने को, वी ऑर्डर्ड आउट, सो खाना आने को लग. So, you know, I broke my own sayam yesterday. So now I have to put extra effort today and not forget to do these things. So ये तो हम लोग करते रहेंगे ऐसे. Binduji, you have something to say. You turned on your video. No, I feel like when you talk about your kids, no, it's so interesting because there is no right and wrong answer because each kid is different, each family is different. But Yeah. then what you learn and how you guys come with the solution for it, for me, it's always amazing. Yeah, Yeah, but I'd like to share something, you know. I mean, of course, I know I am in close association with Dharam since 20 years. My great grandmother-in-law was into Dharam. But frankly speaking, I was eating everything, onions, potatoes, garlic, on everything. Yes, veg, but all kanmur. But yes, since 2 years, you know, gradually and with Ch3-Ch2, no imposition on myself. You don't have to eat this or you're not supposed to eat this. No, but just Ch3-Ch2 say everything left. And I think I used to have 4 to 5 meals a day. And today I'm quite surprised at myself, just 3 meals. And it's more than enough for me. I'm not very proud of myself or something. No, not at all. Because it's like 30, 35, 40 years. I've just done I've just behaved like I don't know what. But yes, Parmagam honors, Jainism, Dharam, these classes. Yeah, this is the impact they have put on me. You should be proud of yourself. It is an good achievement. Sometimes you should pat your back too. Thank you. Thank you. Bring some chocolate milk. Maggie. Okay, tell Maggie. so let's finish. If we are done. Tulikaji, do you want to say something? I saw your video come on too. आपको कुछ बताना है तुलिका जी? मैं कहूँगी कि मतलब अगर एक तरीके से अक्षम्य अपराध इसका टाइटल दिया है तो दिस मीन्स कि अगर संयम नहीं है तो वो एक तरीके से नॉन पार्डनेबल अपराध है अपने तरफ से. और अगर आपको पश्चाताप करने का अगर तरीका ढूंढना है तो बेस्ट वही है कि आप अपने आत्मा में स्थिर रहे. बेसिकली मीन्स कि आत्मा के प्रति आपको अलर्ट रहना है. विषयों और भोगों में पड़ते हैं दैट मीन्स कि हम लोग मूर्छा में चले गए, एक तरीके से कॉन्शियसनेस के थोड़े से बाहर चले गए. तो अगर अलर्ट रहेंगे तो वो बेस्ट तरीका है. So it is saying what you are saying is जब भी संयम में नहीं रहते हैं तो आत्मा के बाहर चले गए हैं एंड उसको फिर से संयम में आने के लिए आत्मा में जाने की जरूरत है. Is that what you said? Like be alert about कि आत्मा और ये जो हो रहा है we are just like an observer. तो वो ध्यान से रह जाता है. वो जैसे हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं तो उसमें ही अगर आगे उधर ही मार धाड़ हो रही है तो हम लोग के भी वैसे ही हाव भाव हो जाते हैं, बट पता चल रहा है कि वो मैं नहीं हूँ, तो वैसे ही हम लोग ऑपरेशन मोड में चले जाते हैं वहां पे. Got it. That is so interesting, the connection with the video game and the observer status. Thank you very much. Thank you, everybody. Shall we continue listening to Priyaji now? I don't know why she sent me two. I thought her story is done. थोड़ा उनका सुन लेते हैं. Second audio में क्या है? किताब के
I पाठ think it is mine. 4 का समरी करूंगी। This is mine. That is yours. Okay, then Yeah, I come don't to laugh Binduji's. because my audio is really bad. Oh, And my Hindi, obviously. okay, then now let me play the one that I have, because this has photo of Priyaji on it. It can't be yours, Binduji, but let me play the This one you must sent sound like today. my voice, maybe. I don't know. Let's see. Yeah, it sounds like your voice too, I agree. I'll play yours now. Okay. जय जिनेंद्र सभी को। आज मैं आप कुछ भी कहो किताब के पार्ट 3 और पार्ट 4 का समरी करूंगी। पहले मैं पार्ट 3 जागृत विवेक का समरी करूंगी। ये कहानी लगभग 2000 वर्ष पहले की बात है, जब आचार्य धर से गिरनार में ध्यान करते रहते हैं, तो रात्रि के समय में अचानक उनका ध्यान भंग हो जाता है। तो वो चिंता करने लगते हैं कि जो शुद्ध परंपरा है, उसका मतलब कि जो बातों बातों में जो स्क्रिप्चर्स गुरु से शिष्य को, महावीर भगवान से आचार्य लोगों को जो प्राप्त हुआ था, उसको कैसे संभाल के रखे, उसके बारे में सोच के उनका ध्यान भग्न हो जाता है। तो वो सोचने लगते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो मुझे अभी तक कोई शिष्य नहीं मिला है, तो मैं जो सारे ज्ञान महावीर भगवान ने दिया है, इस ज्ञान को मैं कैसे प्रिजर्व करूंगा। तो इसके बारे में जब वो सोचते रहते हैं, तो उनको ही लगता है कि उनके सोचने से क्या होगा, जो होना है वही होगा। ऐसा सोचते सोचते वे रात्रि जब सो जाते हैं, वो ऐसा स्वप्न देखते हैं कि नम्रीभूत धुरंधर उनके पास आ रहा है और उनके पावन चरणों में नमस्कार करता है। तब वो ऐसा सोचते हैं, विकल्पों की निरर्थकता उनको समझ में आता है। निरर्थकता का मतलब है मीनिंगलेस। तो जब वो सुबह ध्यान करते रहते हैं, जब वो अपने आंखें खोलते हैं, तो उन्हें 2 शिष्य आके उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। तब आचार्य श्री उन शिष्यों को कहते हैं कि पुरुषार्थ के साथ साथ अंतर्लगन का भी बहुत जरूरी है। तब वो शिष्य आचार्य श्री से की कमी नहीं आएगी, लेकिन हमारी पात्रता का निर्णय तो आचार्य श्री को ही निर्णय करना है। तब आचार्य श्री उन दोनों को 2 मंत्र देते हैं और उनको बतलाते हैं कि सामने स्थित गुफा में इन मंत्र की आप दोनों आराधना करो। जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, तो बहुत ही अति सुंदर देवताओं का आपको दर्शन होगा। और जाते जाते उन्हें ये बात भी बताते हैं कि तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा वास्तविक गुरु है। दोनों शिष्य साधना के बहुत पक्के होते हैं, तो देवताओं का उपस्थिति होने में बहुत देर न लगी। लेकिन वे देवता सुंदर नहीं थे। एक का दांत आगे से निकल रहा था और दूसरों को सिर्फ एक ही आंख था। तब ये शिष्य सोचने लगते हैं कि आचार्य श्री ने तो कहा था कि ये देवता बहुत सुंदर होंगे, लेकिन ये कैसे हो गया कि गुरुजी ने जो बताया था, ये देवता ऐसे नहीं है। तो वो सोचते हैं कि जाके ये बात गुरुजी से ही पूछ लेते हैं। तब उन्हें ध्यान आता है कि गुरुजी ने कहा था कि तुम्हारे आत्मा ही तुम्हारा वास्तविक गुरु है। तो वो स्वयं सोचने लगते हैं कि इसका कारण क्या होगा। तब उन्हें गहराई से जब सोचा, उन्हें समझ में आता है कि एक मंत्र में एक मात्र ज्यादा था और दूसरे मंत्र में एक मात्रा कम था। जब उनको ये समझ में आता है, तो वो सोचने में पड़ जाते हैं कि गुरुजी इतने बड़े विद्वान हैं, तो उन्हें इतना सब पता है, तो वो क्या ऐसे गलती कर सकते हैं? क्या हम इन मात्रा को सही करें या ना करें? दोनों बहुत इस बारे में चर्चा करते हैं। फिर वो इस डिसीजन पे पहुंचते हैं कि वो मात्रा को सही करने का। फिर वो मात्रा सही करके ये मंत्र जापने लगते हैं। दोनों शिष्यों ने बहुत ही विवेक से मंत्र का
जाप किया था, इसीलिए देवता प्रत्यक्ष हो जाते हैं और इन्हें बोलते हैं कि वो देवता इन दोनों शिष्यों के कैसे सेवा कर सकते हैं। तब शिष्य कहते हैं कि ना हमें सेवा की आवश्यकता है, हम तो सिर्फ अपने गुरु के आज्ञा पालन कर रहे थे और ये मंत्र का जाप कर रहे थे। फिर दोनों शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचते हैं। आचार्य दर से प्रसन्न होकर इन दोनों शिष्यों को, एक का नाम पुष्पदंत और दूसरे का नाम भूतबली रखते हैं। ये नाम सुन के दोनों शिष्य अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जो गुफा में हुआ था वो कहानी आचार्य श्री को बताना चाहते हैं। तब शिष्यों के मन की बात आचार्य श्री समझ लेते हैं और बोलते हैं कि आपको जो गुफा में बात हुआ था वो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब आचार्य श्री शिष्यों के क्वालिटीज के बारे में बताते हैं। पहला गुण तो ये होना चाहिए कि विनय के बिना तो विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, पर विवेक और प्रतिभा भी अनिवार्य है। गुरु की प्रति आस्था की भी महत्वपूर्ण स्थान है, पर वह आतंक की सीमा तक नहीं पहुंचना चाहिए। तीसरा क्वालिटी यह है कि स्व विवेक की भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु हमेशा शिष्य के साथ उपलब्ध नहीं होता है। फोर्थ क्वालिटी यह है कि विवेक तो होना बहुत जरूरी है, लेकिन विनय और मर्यादा को वो भंग नहीं करना चाहिए। क्षेत्र और काल के प्रभाव से समागत विकृतियों का निराकरण करना जागृत विवेक का ही काम है। अब आगे आचार्य श्री पुष्पदंत और भूतबली की प्रशंसा करते हैं। वो बताते हैं कि वो क्यों इन दोनों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकारना पसंद करते हैं और उन्हें क्यों वो आचार्य का पद देते हैं। वो बताते हैं कि दोनों शिष्यों ने मंत्रों में सुधार तो किया, पर विनय और मर्यादा को भंग नहीं किया। मंत्रों के सुधारने से पहले वो दोनों ने बहुत सोचा। जब सुधार के सत्य सिद्ध किया, उन्होंने उसके बारे में अहंकार नहीं किया। सदाचारी, संतुलित विवेक और विनयशील मर्यादाओं से समृद्ध ऐसे दो शिष्य की ही उन्हें कामना थी। यह था इस पाठ का समरी। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमें कौन से लाइंस अंडरलाइन करना है। तो पाठ जागृत विवेक, पेज नंबर 22, ऊपर से 4th पैराग्राफ, जहां लिखा है कि यदि पात्रता हो कुछ भी अलंब्य नहीं, पुरुषार्थियों की विपसा तृप्त होती ही है, पर सब कुछ अंतर की लगन पर निर्भर करता है। उस 2 लाइन को आप अंडरलाइन कीजिए। उसी पैराग्राफ, उसी पेज में जो लास्ट पैरा है, तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा वास्तविक गुरु है, वो लाइन अंडरलाइन कीजिए। नेक्स्ट, पेज नंबर 23 में लास्ट बट 3rd पैराग्राफ, सफलता विवेक की धनी विद्वामानों के चरण चूमती है, वो पैराग्राफ अंडरलाइन कीजिए। और उसी पेज में लास्ट पैराग्राफ, हमारी आराधना का आदेश तो आचार्य श्री की आज्ञा का पालन मात्र था। नेक्स्ट, पेज नंबर 25, उसके टॉप पे आप लिखिए क्वालिटीज ऑफ शिष्य या शिष्य के गुण, ऐसा लिख लीजिए। जो फर्स्ट पैराग्राफ में है, विनय के बिना तो विद्या प्राप्ति नहीं होती, वो फर्स्ट पॉइंट है। फिर सेकेंड लाइन में जो गुरु के प्रति आस्था का भी महत्वपूर्ण स्थान है, वो सेकेंड गुण है। और थर्ड है समागत समस्याओं का समुचित समाधान तो स्व विवेक से ही संभव है। जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसे 3rd पॉइंट मार्क कर लीजिए। विवेक का स्थान सर्वोपरि है, किंतु वह विनय और मर्यादा को भंग करने वाली नहीं होना चाहिए। और लास्ट बट सेकेंड पैराग्राफ, जो सदाचारी, संतुलित विवेक और विनयशील मर्यादाओं से समृद्ध ऐसे शिष्य की ही कामना मुझे थी, वो आप अंडरलाइन कर लीजिए। सो वी आर डन विथ चैप्टर 3। थैंक यू।
Very nice, Binduji. You even gave us the points to underline. Unfortunately, I don't have the book. But I do have a question, मुझे इसमें कुछ नहीं समझा. What is the difference between Vinay and Vivek? I thought they were both the same. In English book, I'll tell you what they say. विवेक मतलब होगा पेशेंस से करना और विनय होगा हम्बलनेस. One Yeah. is polite and other one is Yeah. humble. Yeah, the humility is the Vinay, and the Vivek is the power of discrimination between right and wrong. Oh. So which one? They said Vivek is important and then No, Vinay for without Vivek is not good. Is that what they were saying? शिष्य के गुण में तो विनय बोला है ना, और विवेक is that we should be knowing what is, जैसे अपन लोग अनायतन का है ना, कि हम जैनों के हम जैन रिलीजन को अपना जो ग्रहित को समिथा का अपन 6 डाला में पढ़ रहे थे, तो उसमें हम कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के पास क्यों नहीं जाएंगे, तब हम अपना विवेक लगाते हैं. तो we have this vivek, this power within us to decide, oh, that is the wrong place to go. If I go, मेरा सम्यक दर्शन छूट जाएगा और मैं वापस मिथ्या दर्शन में चला जाऊंगा. तो that is the power of discrimination, is called the vivek. And Vinay is the ultimate humility, wherein you surrender your ego completely in front of Guru and say that I'm here, and whatever you put in me, I will just absorb that knowledge, and I really do not know nothing. So we do not indulge in all those kind of conversation and argue with Guru, because we keep him on a very high level and say that you know the best and you will take me all the way to the liberation by teaching this science of liberation. Got it. Got it. Binduji, we're going to read it in English also. Yeah. Yeah. So it says विनय के बिना तो विद्या प्राप्ति होती ही नहीं है. So in the English book it says wisdom can never be attained without politeness, but thoughtfulness and talent cannot be dispensed with either. Oh. Okay. So I think Vinay in English book they're saying it's polite, being polite. Polite. And then Vivek is in the English book? Sorry. The wisdom. Wisdom. Vivek, I know. Vivek is thoughtfulness. Thoughtfulness. Yeah. And which of the two is more important to have first? Only then the other comes? What did they say in the story? Being polite. Being Vinay. polite. Okay. Yeah. Anybody caught anything interesting in this story that they want to share? What was the most interesting thing to them? For me, it reminded me, this is the story of the writing of Naukar Mantra. I had heard the story at that time. Yeah. Bhutabali and Pushpadanta. Yeah. The students. And then two heavenly deities gave their darshan. One didn't had उसका आंख खराब था, वो वाला एक का दांत का problem था, एक का हाँ, आंख, just like Binduji just said in her story. But that's the exact same story actually. Yes. But Tulikaji, Shikhaji, Dollyji, did you all catch anything interesting in the story that you want to share? आई वुड लाइक टू से इसमें जो एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरु के प्रति जो हमारी आस्था जो है वो अडिग रहनी चाहिए, बट स्टिल ऐसा भी नहीं कि ब्लाइंडली फॉलो करे. और जैन धर्म अपना ऐसा है कि जिसके जो आप अपने जीवन में जो भी आप लाना चाहते हो, ट्राइड एंड टेस्टेड है पूरा. ऐसा नहीं कि परंपराओं से कहा गया है इसलिए उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है. यू कैन योरसेल्फ सी द फैक्ट्स एंड रिजल्ट्स. I think Prabha ma'am always says, no, Pariksha Pradhani bano, something that. Yes, Pariksha Pradhani. Correct. And Shikhaji, as the part where it said that your Atma is your Guru. So yes. basically, when this here, let's say in Parmagam,
Prabhaji is holding our hands and guiding this ship, and that she's also captain and she's also navigating in the right direction. But at the same time, after the ship, when the ship reaches close to the, our destination, we still have to get down and walk on our own to our final destination. That's Yes. when our Atma will become our Guru, which is fully ready to go with it. Very, very beautiful. Very beautiful, Simaji. 1 second. Chikaji also has something to say. Here we go. Can you guys hear me? Yes. Actually, I have nothing to say right now. I was just mute. Oh, okay. Okay. Dolly ji, did you have something to add? No, the same thing everywhere. As the story says, Vinay, Vivek, they go hand in hand. And again, as Prabhaji says, just don't accept anything blindly. And that's what our dharam teaches us. Whatever you learn, it has to be tried, tested, and then you believe in it. It's just not, blindly kisi ko bhi believe kar lo. Not at all. So I was just wondering, Vimalji, Ah. I think first we have to have the Vivek to find the right Guru, let's say, and then once we know it's the right Guru, then totally surrender by having ultimate humility, which is Vinay. Right. That makes sense. Best I understand here is, we don't even need to find the right guru because हमें तो सब बस दे दिया गया है. I mean, yes, I used to have questions. I would ask a lot of questions, but now, as and when we keep on learning more, वो श्रद्धा इतनी पक्की हो जाती है कि there's no other way out. I mean, this is the right path. This is And it. other thing that we learned in Nimitt Upadan is, जब उपादान रेडी होगा तो निमित्त अपने आप प्रेजेंट होगा. तो शिष्य की पात्रता यदि रेडी होगी, विच इज हर उपादान, तो अपने आप राइट गुरु मिल ही जाएगा. Right. So that is True. That's what, and yeah. True. We will listen to the next story by Binduji now. अब मैं पार्ट 4 अभागा भारत के बारे में समरी करूंगी. सम्राट भरत के दरबार में लगातार 3 शुभ समाचार आए तो पूरे दरबार में बहुत खुशी का माहौल रहता है, लेकिन सम्राट भरत के चेहरे पे कोई आनंद नहीं दिखाई देता है. पहले शुभ समाचार ये होता है कि ऋषभदेव तीर्थंकर को सर्वज्ञता की प्राप्ति हुआ होता है. इससे तो सम्राट भरत खुश तो हुए. दूसरा समाचार ये है कि सम्राट भरत को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई होती है, लेकिन उस समाचार से उनके चेहरे में कोई हंसी नहीं दिखाई दिया. तीसरा शुभ समाचार ये है कि चक्र रत्न की प्राप्ति का समाचार मिलने से उनके चेहरे पे बहुत गंभीरता दिखाई दिया. तो दरबार में उपस्थित महामात्य का मतलब मिनिस्टर इन चीफ और चीफ ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स इन द दरबार को ये दिखाई देता है. और वो सम्राट भरत से पूछते हैं कि क्या वो जान सकते हैं कि इतने शुभ समाचार के बाद भी उनके चेहरे पे इतनी गंभीरता क्यों है. तब सम्राट भरत उनको कहते हैं कि क्या आप को भी मुझे अपने दिल की बात शब्दों में बयान करने की जरूरत है. तब महामात्य उनको 3 बात बताते हैं. पहली बात यह है कि पर्यायों के परिणमन को कोई टाल नहीं सकता. और दूसरी बात यह है कि घटने वाली घटनाओं को हमें स्वीकार करना ही होता है और वो हमारा कर्तव्य है. और निरंतर अपने भाग्य के उदय से जो बधाइयां और जो शुभ समाचार मिलते हैं उन्हें स्वीकार करना ही होता है. रुचि की प्रतिकूलता में सद्भाग्य भी
दुर्भाग्य फलते हैं। सम्राट भरत को जो चक्र रत्न की प्राप्ति हुई थी उसे सारा जगत भाग्य समझने लगा और बहुत प्रसन्न होने लगा, लेकिन सम्राट भरत को इस चीज में कोई आसक्ति नहीं थी। उन्हें तो सिर्फ ऋषभदेव भगवान की जिनवाणी सुननी थी, तो उन्हें ये चक्र रत्न दुर्भाग्य लगने लगा। दिग्विजय के प्रस्थान के समय मंगल और तिलक करने के लिए जब राजमाता यशस्वती नंदा आती हैं, तो सम्राट भरत उनके चरणों में वंदन करते हैं, और राजमाता जब उन्हें कहती है कि तुम भाग्य विधाता हो, तब भरत सम्राट उन्हें कहते हैं कि आप मुझे कुछ भी कहो, लेकिन भाग्यशाली नहीं कहो। भाग्यशाली वो है जो दिन में 3 बार भगवान ऋषभदेव की दिव्य ध्वनि सुन सके। मैं तो अभागा हूँ। ये बात राजमाता को सही नहीं लगती है, तो वे शांत रहती है और सम्राट भरत को ये बताती है कि भारत अखंड होना चाहिए, 6 खंडों में कोई विभाजित नहीं होना चाहिए। भरत सम्राट अपने माता को कहते हैं कि उन्हें अपने कर्तव्य का पहचान है। कर्तव्य को टोककर बुद्धि ही बर्दाश्त कर सकती है, हृदय नहीं। जन भावना जानने के लिए सम्राट भरत के गुप्तचर जब सारा समाचार लेके आते हैं, और जब आपस में बात होती रहती है, गुप्तचर ऐसे बताते हैं कि इतने वर्षों में जो संभव नहीं था, इतने लोगों को जुलमुल के रहना और एकांतरित करना जो संभव नहीं था, अब सम्राट भरत से वो संभव हो गया है। जब ऋषभदेव के दर्शन के लिए सम्राट भरत पधारे, उस अवसर पर उनके निमित्त से भगवान की दिव्य ध्वनि भी असमय पे प्रसारित हुई थी, ऐसे वो गुप्तचर बताते हैं। तब भरत सम्राट ऐसे कहते हैं कि ऋषभदेव के दर्शन तो उनकी व्यक्तिगत रुचि है, उसे राजनीति का रूप देना उनको पसंद नहीं। आगे कोई बोले कि सम्राट भरत ने ऋषभदेव की दर्शन तो राजनीति के लिए किया, तो वो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तब गुप्तचर के अध्यक्ष कहते हैं कि आपके चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होगा, सौभाग्य का उदय हो तो लाभ भी मिलता ही है, और आज तक किसी की चाह पूरी हुई नहीं है। तब सम्राट भरत उनको कहते हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आता है कि लोग मुझे भाग्यशाली क्यों कहते हैं। भाग्यशाली वो है जो दिन में 3-3 बार भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ लेते हैं, और मैं तो अब तक एकाध बार ही लाभ लेने वाला हूँ। गुप्तचर यह कहते हैं कि दुनिया कुछ भी कहे, पर भरत भाग्यवान नहीं, अभागी है। चलिए अब हम इस चैप्टर में जो पॉइंट्स अंडरलाइन करना है उसके बारे में देखते हैं। पहला तो अभागा भारत चैप्टर 4 पेज नंबर 26 में लास्ट से 4th पैराग्राफ। जगत में ऐसा कौन सा प्रमेय है जो सार्थक प्राज्ञ को आगमय हो। इसका मतलब ये है कि नथिंग कैन गो अननोटिस्ड बियॉन्ड cautious wisdom's eye। पेज नंबर 26 लास्ट लाइन, क्या महामात्य को भी, महामात्य का मतलब मिनिस्टर इन चीफ। नेक्स्ट इज पेज नंबर 27 फर्स्ट पैराग्राफ सेकेंड लाइन, पर्यायों के परिणमन को कौन टाल सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, अपने नियत क्रम में घटने वाली घटनाओं को साक्षी भाव से स्वीकार करना। You have to underline that line. Then second paragraph, श्रद्धास्पद सत्य को स्वीकार करने के लिए राग बाध्य नहीं होता। That one. And next is third paragraph, रुचि की प्रतिकूलता से सद्भाग्य भी दुर्भाग्य फलते हैं। Next पेज नंबर 29 फर्स्ट पैराग्राफ,
कर्तव्य की ठोकर बुद्धि ही बर्दाश्त कर सकती है, हृदय नहीं। नेक्स्ट, पेज नंबर 30। 1 2 3 4 फोर्थ पैराग्राफ। चाह आज तक किसी की पूरी नहीं हुई है। And that's all from chapter 4. Once again, Michame Dugdam. I would also like to thank you all for letting me part of this group. Thank you. Thank you, Binduji. As usual, very crisp and clear and letting us know what to underline. It's helpful. Anybody has any comments? Dolly ji? Ikaji? Am I audible? Yes. One point I really like in this summary is if you are not convinced with someone, जैसे कि उनको बोला कि आप तो भाग्यशाली हो, but वो convinced नहीं हुए, तो rather than just telling it again and again, just be quiet. You know, this is also a very good thing. मुझे ऐसा लगा कि बार बार कुछ बोलने, अगर आप convinced नहीं हो किसी की बात से तो चुप ही रहो. This is good. Right, right. Meaning Bharat Chakravarti should be quiet, or the person who's trying to convince the other person has to be quiet? Who has to be quiet? The person who was trying to convince. Convince them has to be quiet. Okay. Yeah, you say it once and then you let it go. You don't get stuck on it. Warna apna bhi kan badega, stuck on it. Okay. To everyone, like our kids also, if they are not convinced on something, we are just trying to explain. We can try our best, but then let it go. Yeah. Like, Actually, if you're talking about kids, I explain the things once to my daughter. She never agrees with me. I let it go. Then at night, when everything is calm and quiet and she's more amenable to listening, then we have the same conversation and we are actually able to have a dialogue about it. Is the difference. I think nobody likes to be told that what you're saying or doing or thinking is wrong in the moment. Nobody will, at least where we are in our life stage, we may not appreciate that. And especially the kids is what I have found. Yeah. very true. Even the elder people, if you think they are not doing something right, they won't appreciate if we correct them. Right. Not in the moment, never in the moment is what I have found. Sometimes, magar wo sanyam nahi rehta hai, like we said, no, in the other story, sanyam is important. Kabhi nahi rehta hai, to fir there's explosions all over the place. But yeah. Hemalji, I lost control to mute and unmute me myself. Really? हाँ, मुझे unmute. बोल रहे थे ना कि जब दो लोग बातें कर रहे हो तो what was that conversation? Could you please again reiterate? If you are not convinced with what other is telling, be quiet. Yes. So in case of, especially when you are staying in front of Maharaja during those times, Rajas and Maharajas, you better first take Abhaydan before you say, because what if the Raja is not convinced, then he can hang you. फांसी की सजा दे सकते हैं. ये बहुत होता था लास्ट पहले. इसलिए पहले ना दान के उसमें विद्या दान को इतना ज्यादा नहीं मानते थे. सबसे बड़ा दान अभयदान होता था, क्योंकि अभयदान बिना लिए यदि कोई बात कह दी और राजा को बुरी लग गई तो वो या तो कारावास में भेज देता था, which is like put in the jail behind the bars, और या फिर हैंग ही कर देता था. फर्स्ट क्लास में शायद. One of the things I really liked in this story was that he got 3 different pieces of news and then his response to each news. The reason for the response to each news is very, very, very significant. It takes us back to our Siddhants. In the first one, where it is you paryay ki parinaman nahi rok sakte. And the second one is it was going to happen that way, so it happens that way. And third one kya tha, Binduji? Again, I forgot. I'm trying to memorize it and yaad nahi rehta hai. Third one kya tha? वो चक्रवर्ती बन गए तो उसका क्या उसका सोच था? वो उसको he thinks of it as durbhagya because he can't go listen to Bhagwan's Divya Dhwani. I thought that all those 3 just tie us back into all the things we've been learning in the last year and a half with Prabhaji. It's a reminder of those teachings, basically. Right.
In the story, they don't mention that he'll go to Rishabh Devji as soon as he gets the news. I think he has to carry on with the duties. So that's when his mother is saying that after the tilak and everything, he's going to a certain place where he meets all the Guptachar and everybody. There, after going there is when he'll go, because she was saying that Bharat Abhaga hona chahiye, so he'll have to keep on doing his duties. So that's why Hemalji's confusion. Okay, I understood. Because, yeah, thank you. So we can carry on and listen to Rupalji's now. Good morning. Today is Friday, September 29th. This is Rupal Shah. I'm here to talk about chapter 4 from kuch, kaho. Chapter 4's title is called. So this is actually chapter 5 now. She did send me a message saying she mixed up the numbers. So called The Eater of the Leftovers in English. It is a story about Emperor Bharat, from now on called Bharat, who is returning from his victory over the 6 continents. He is to be greeted by his mother, Yashavati Nanda. As Bharat bows down to get his blessings from his mother, she begins to realize that Bharat seems to not have glory on his face or any enthusiasm and is forlorn. And so she asks him why he is not happy and what the matter is. It is at this time that Bharat proceeds to tell her a story that has really, an experience that he had rather, that really has shaken him up. He said that post his victory, he went to go get his name written on a popular rock that was full of names of other emperors on it who had enjoyed the rule over the 6 continents. In order to get his name written on it, he had to erase one of the other names. And that is when it hit him that the mortality of his name, of himself, was very much in existence. That if somebody had to be erased, there will be a time too when his name would have to be erased. And he therefore felt that he was the eater of not untouched food, but in fact of leftovers. This is when he explains to his mother that the winner of a mind assumes not divided continents, but really an undivided soul. He also says to her, it is the assumption of the soul in an integrated form that makes life truly more meaningful. And then the last point that he tries to make to her, hoping to make her understand, is that facts cannot be fabricated by emotions, but that reality and appearance are judged not by passion, but by thought. While his mother became a little bit emotional, she begins to understand that now Bharat has begun to take on detachment for a lot of the things that is around him. She in fact blesses him for his detachment, and he is praised. Bharat, however, is very quick to also respond to this praise by saying that could his detachment really match that of the sons of Rishabh, like Bahubali and Vrishabh. And he says to his mother, is it possible that Rishabh Sen, who accepted an ascetic life from the father, Rishabdev, and became his first Gandhar, is he really less fortunate and detached than this Bharat is? Yes. Bharat finally ends by saying that he may not have complete hold over his attachment, which is what he wants, but his knowledge and wisdom will never hoodwink him, and that he would not be able to give up the emperorhood, to stay detached and follow his soul. And so therefore he will not be proud of it, nor will he enjoy it, because he truly understands that it is merely passing and of no relevance, as the soul is the most important thing that one has to go after.
and therefore he felt and feels that emperorhood was not his glory, but it was his helplessness. That ends chapter 4. Good morning. This is for the class on Friday, September 20. Okay, sorry about that. Any comments? I guess by now everybody knows what we are doing here. Dollyji, we haven't heard from you in a while. You have anything you want to add to what Rupalji talked about in the story about Bharat Chakravarti? I mean, not much basically. Something that touched you, some point that touched you? हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, जो होना है वही होगा. That's what, I'm landing up to the conclusion. That's what each and every story somehow, that's the gist I'm getting from each and every story. Of course, there are various aspects as well. What parts of the story makes you think this particular thought? Just support your idea, that's all, with what you heard. I think you got muted, so if you're saying something, we can't hear you. Yeah, I don't know how to go about it, but Anybody felt or thought what Dollyji thought, and then can add some words there? In the last story, she somehow convinced him to go and conquer she was telling him about his duties. Yes. So he had to go for his duties. So and now he had achieved all that. He is now an emperor, but he's still not happy. So all this had to happen, and he had to see what happened when he went to the war. So now he is detached. Now he knows what his father and what his brother. So what happiness they have in that detachment. Right. Got it. Tulikaji? It's like अपनी इच्छा अपने लिए कर्स बन जाती है. Very true. That goes with the Moksha chapter 3 that we are reading, where they talk about Icha and how it's never fulfilled, can never be fulfilled. What this story brought to my mind was what Prabhaji always says, Kamal kaise kichad mein rehta hai. This is the beginning of that for Bharat Chakravarti is what I'm seeing. That he probably has reached some point of Samyak Drishti state, or he's already is Samyak Drishti, and now he's just living because he has to live in this role, and till he can himself give up the role and move on to a different stage of life is what came across to me for this. Here, Hemalji, I would like to add something. That's my personal experience. There are various stages, right? When you're young, you're very excited about your career or your particular lifestyle, everything. And you feel that, yes, you are enjoying it and you're making the most of it. The same thing at a later stage. Yes, you get all that, but the experience is different. You become indifferent towards it. And it doesn't really hold that importance or priority in your life. And things do change. And you do realize that, again, as you move forward, gradually nothing will really excite you. And that internal peace, this is what you're seeking for. That's a big realization that hits you, when such stories, you come across such stories. True, very true. I agree. In these 5 stories, I've noticed Tulika ji has become queen of one-liners now. Initially, the Vinit ji was like 3 points. Now she's beating him in that game. I totally agree with you, Binduji. I actually do like your summarization in very few words, Tulika ji. I always like to read and hear what you have to say.
She hits the bullseye. Hits the bullseye. I completely. All beating around the bush. We're running like a marathon. She comes with a sprinter and she's cross the line. Very true. तो इस बार का 10 लक्षण मेरा अच्छा हो गया फिर थोड़ा ज्यादा इधर जाने के लिए मिला ना आत्मा की तरफ तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से इंटरप्रिटेशन हो पा रहा है नहीं तो ऑफिस के साथ साथ ये सब करे तो कहाँ आधा ध्यान भी नहीं जाता है इसमें हाँ मगर आपका ध्यान हमेशा जाता है मैंने देखा है Seema ji, did you have something to say about this story? Yeah, I It's was just something you thinking. found interesting. Yes. I really find the part that I find very interesting, even though all these stories I'm hearing partly. Sorry, first of all, not feeling well and then looking after my son. Anyhow, what I like the most about this is जब भरत जी ये सारा चिंतन कर रहे हैं 3 चीजें आई हैं साम्राज्य में ये सब एंड तो उनके मन में बड़े नहीं ये वाला वो नहीं ये तो शिलालेख पे नाम लिखने वाला है आई गॉट इट सो बेसिकली यहाँ पे सभी स्टोरियों में ये दिख रहा है कि भरत जी का चिंतन बहुत ही ज्यादा अंदर से वैराग्य है उनके अंदर और उनको इन सब से अटैचमेंट नहीं है आई थिंक डॉली जी ने शायद ये सब कह ही दिया है सो बेसिकली वो पहले से ही अनासक्त थे इन सब चीजों में से एंड ही इज नॉट अटैच्ड अंदर से डिटैचमेंट पहले से ही चल रहा है इट्स जस्ट दैट नाउ व्हेन दैट राइट टाइम विल कम इट विल हैपन एंड ही विल जस्ट एंड दैट्स व्हाई भरत जी को कहते हैं ना कपड़े उतारते ही मोक्ष हो गया था तो इसका मतलब वो राज्य करते हुए भी अपने सम्यक दर्शन के जो भी हायर लेवल पर जाते जाते एकदम हायर स्टेज पे थे कि वो छपक श्रेणी मार के फिर सीधे कपड़े उतारते मोक्ष चले गए ऐसे कहते हैं ना तो उसको कहते हैं अक्रम मार्ग से मोक्ष चले गए मतलब कि उनको ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा दीक्षा विक्षा वाला थोड़ा ही सा हुआ ट्रांजिशन एंड गॉन तो वो सबसे बड़ा मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगता है कि उनका तत्व चिंतन कितना गहरा होगा या प्रीवियस कितने लाइफ से होगा कि अब इस लाइफ में आके हर इंसिडेंट पे उनको अंदर की दृष्टि जो थी ना उनकी खुली हुई वो हमेशा उनके लिए काम करती थी दैट इज व्हाट आई वाज फीलिंग ऑल अलोंग I think the point you raised was really good. The thread that we hear is the vairagya in him. Yes. And I think that is the reason why we see him responding differently compared to other people who would have had the same level of achievement in their If life. I have to say Vineet ji's one line or Tulika ji's one line, it's called Vairagya Parak Chintan or Vairagya Parak Tattva Parak Chintan. That's the one word for the whole thing. Very nice. Very nice. And I would like to add here is that, what struck me is Purusharth, which we have been discussing in last few sessions. And then again, Purusharth is again related to Krambad Paryay. How these stories are, connected to one another. I mean, all concepts and you beautifully understand how it goes about. Yes, it is nice. Thank you. Did we listen to both of Rupalji's or do I have to play the second one for her? Second one? Yeah, you have to play the second one. Okay. No, you played the second one. My name is Rupal Shah. No. I'm responsible for chapter 5, which is called The Conversion from Aap Kuch-Kaho. So this is chapter 6 now. She made that little mistake. So. Oh, this is a beautiful story about Kanji Swami, who is essentially a spiritual leader of the Kohinoor Stanakvasi Jain community. This story is about his conversion to the Digambar Jain religion as a vowless lay follower. The story begins with several questions that he has in his mind and his decision on how he was going to make some visual changes in front of the Stanakvasi community that he had been a part of. The second half of the story is about several of his key followers that were powerful that come to him to try to convince him not to change.
And what follows are his answers. So here goes. The thought processes that Kanji Swami experienced were the following. He felt that man enjoys special privileges over animals, but he understands that a man sometimes inherits property, but he also will need to inherit the slavery to conventions. And does that truly make him a free person? The second part that he talks about is, or thinks about, is being a member of a sect, such as the Stanakvasi sect. For him, he realized that what he was about to do was to create a revolutionary change. And he had accepted that fact, the fact that he was on the wrong track. And so therefore, the idea of transgressing, in fact, would make some of his followers and the people tremble. He was concerned that he had squandered enough time away from the right path, and it was necessary to go forward. He had mistaken the fact that the followers would be his companions, and that he realized that when he does this, this is a path that he will do and set out alone, and the followers will stand out, with the true followers definitely coming with him. And as a result, it is on the auspicious birth anniversary of Lord Mahavir, and with the picture of Lord Paraswanath in front of him, that he throws away the mouth cover before the picture and declares himself a vowless lay follower of the Digambar Jain religion. As you can imagine, this came as a very big shock. This is the time then the second part of the story begins, where you have the powerful, reputed people who come to him, trying to persuade him not to change. Here are some of the questions and answers that follow. One of them says, "You've not done the right thing." And Swamiji says, "I have. I know what is right and what is wrong. And for me, it is the destruction of infinite transmigration. This birth of mine is meant to destroy the births and not to support any other community or fraction. It is about what I need to do." Another person said, "Well, your birth will definitely be destroyed, because how will you live without food?" To which he said, "I have found a way to assume a state of bodilessness. I don't need this body. Why should I bother about this body?" Another one said that the community would go to pieces and that they would not follow. Swamiji, not used to this kind of language, was so into his introspection and knowing full well the path he wanted, he just completely overlooked everything and started looking and reading the Samaisar. This is when a kinder gentleman said, "We will do exactly what you say and read the Samaisar with you and listen to you, but we ask that you please do not take away the mouth cover." And this is when Swamiji made, with kindness, a very, very important point. And he said, "It is not a matter of little significance, but it is something very grave. This mouthpiece is a symbol of adopted perverse belief or mithyatva. And if you want to understand reality, and if you want to destroy the births of this life, you have to give up the insistence on this. It ceases to be a mere question of a mouth cover, but that of the perverse belief beneath it." And these are important paragraphs for you to underline in the book, in the chapter. Swamiji then firmly goes on to essentially say that it is the nature of these things, and that he cannot betray himself any longer, and that he must therefore carry on and do what he needs to in order to follow his path of understanding his soul and getting moksha. It is at this time that one more person says, "But you must protect the community, come what may." And Swamiji kindly says, "You go ahead and protect your community. Let me protect my soul." When he also then continues to say that his decision he is very adamant about, that it remains
When asked, "Are you adamant about it? And you remain unmoved?" he immediately says, "I am unmoved, unmoved, and unmoved." Such is the power of Swamiji's belief of the path of moksha. And this concludes the chapter. Thank you. Good morning. Any comments? या जहाँ कांजी स्वामी जी ने अपनी मुपति का त्याग किया था, we had just visited that place recently when I had been to Songarh. That place is named as Star of India. So yeah, you get those vibes over there. And again, Ch3-Ch2, that's what Gurudev Kanji Swami ji is teaching us. Nischay is important. Vyavahar really doesn't matter. Yeah, I can see that he could not be swayed once he found his true path. And to me, that speaks volumes, because he is, it gave him the strength to do away with years and years of indoctrination in the Stanakwasi religion. And he was willing to give it up for his soul. It takes a lot of courage, you know, Hemalji. Yeah, but and the courage comes from his conviction that what I'm doing is right. Yes, yes. And I think that conviction is what we all can hope to achieve, you know, through the work we are doing with Paramagammanas. Get to that place of conviction so that we have the strength to walk the path as well. But very, very powerful story, I have to say. The reason I say that is something I can partially relate to only because it's a recent occurrence. You know, some of the other stories are so long ago that I don't feel connected in terms of I know this person and I hear this story. But now with Kanji Swami, I know a lot of people who knew him when he was alive. So it becomes more impactful to me, is what I would say. Any other comments from others about this story? Yeah, if I can. So in my case, I just want to thank my mother and father for taking me to Vadodara Panch Kalyanak when Kanji Swami was alive, and I had his darshan. And I was small, like 4 years maybe of age. And I also went to Songarh, and that time Kanji Swami was not there, but Bahan Shri Ji is there, and I got her darshan too. So that was very nice. In fact, I have visited all the pilgrimages, most of them in India, just because my mother and father will take on vacation to pilgrimages only. So, but that's one thing. Second thing is, even though Kanji Swami has only converted from Sthanakvasi into that Digambar Jain, a proper Adhyatmic marg, sometimes I feel like all over the world, even though it's good to be born in the Jain religion and having, a Jain kul, but sometimes though people in the Jain kul themselves cannot see things so clearly and don't take the right path and do not realize the importance of this Durlabh Manushya Bhav, which is very precious, and do not go on this marg, and do their Adhyatmic Unnati all the way to liberation, or at least attaining some darshan, or at least starting the process. But I see that there are a lot of converts, maybe Muslims or any from any religion, those who believe in this philosophy and start following it. And so you don't have to be Jain by kul or by birth. You can just adopt it also. And especially nowadays when the kids are getting married and they're very broad-minded, and especially in YG and groups like those, like Young Gens of America over here, I see these kids talking and I like, wow, these kids are really talking the way it should be. I mean,
these similar such things have happened in the past and yielded very good results, So I am like, okay, at least if they're open to all that, that's perfect. They're still going in right direction rather than really taking the wrong direction and adapting to non-vegetarian and other things. So in fact, they are so powerful that they're making them convert because of what they believe in, and they also go with finding the other person if they believe in that, and then they go for final steady relationship. And what else about, yeah, that Nishay part, that he was so determined to go on this path, that hatagrah matagrah kuragrah, that we call it, about that Mupati, and putting that on this, and he could clearly see that as a grahit mithyatva. Is like, definitely Mupati is put just to avoid जो जीव दया के लिए करते हैं ना, कि वो सूक्ष्म जीव ना मरे, उसके लिए तो उनका वही था कि हाँ, नहीं मरना चाहिए, परंतु that is a part of a ritualistic practice. That's where he was trying to say कि नहीं, ये तो ग्रहित मिथ्यात्व है. तो वो बहुत अच्छा है. और इस तरह से कुछ भी रहेगा अपने रास्ते में तो एक ग्रंथ ही है, और निर्ग्रंथता जब तक नहीं आएगी, ये सारे मेंटल ट्यूबर्स जब तक रहेंगे, we cannot proceed on this path. So that is what I thought. Very nice, Seema ji. Very nice. Tulika ji, Bindu ji, anything to add? We are almost run out of time. So I'm thinking that 5 more stories left. I don't know, how do people feel about the time, because I think class time is practically over. So that's why I'm asking. And if we are ending the class, then any few last comments on Kanji Swami's story, we can add that. We can hear that as well. Yes, again, the same thing. What I would like to add is unka jo drid nishchay. Okay, and I guess it is sanskar, purva bhav sanskar. That's, I mean, we are just discussing this, but he actually did it. Okay, and he was a leader of a sampradaya. He was just not a normal yogi or something. So at that level, taking a stand and accepting what he believed in. So where can each one of us use that in our lives? Every possible way. I guess. Give one example of where you could use it. Just teach our children to leave Kannur, not get attached. At least me as a mother. For yourself, yeah. What will you do for yourself? Which is which you will do from this inspiration. Okay, at every situation, just not get attached to it, first of all, and take a call. Being an audience, rather than getting into the role, just being an audience and deciding something. Yes, that is, I guess, Vednan. That's what my husband is adding here. He's helping me out to put words. So, so yeah, at every point, Vednan. So your inspiration from this story is that you're going to try to do Vednan. Yes. At all moments that you can be alert about your Atma and do Vednan with Vednan. Okay. What about you, Binduji? What does this inspire you to do? So you know how Kanji Swami, he wants to go to Digambar section, and everybody is convincing him not to do. But he is so in his mind, he's determined, and he has a strong conviction that that's what he's going to do. In our life also, it may be for little things, like to attend class. We have a lot of things. We can start with small things. We always, even I do, we always find excuse, there is something, but at least we can put an effort. If we can't attend class, we can listen to the YouTube video. And I think, and Dolaji was saying that how she used to eat the root vegetables. Now she's not eating. Small steps like that. I think that's where we can start. Once we have conviction that what we are learning is the truth, then we can actually live it. And for myself, for this Paryushan
my goal was to do no nighttime eating. And now my goal is to continue that moving forwards. And this inspiration that he actually went to the extent of giving up so much, for what he believed is the truth. I believe Bhagwan's word is the truth, and I am using that conviction and the strength that gives me to continue with this not eating at night thing moving forwards. So I'm going to use it for that. I'm going to remember his actions and his words as I move forward into the rest of the year after Shamavani Day kind of thing. You know, Hemalji, eating early, like the early dinner, Yeah. if you want to keep it for a long time, build a habit that you will sleep early also. Yes, I read about that. People that are successful in doing that actually go to bed early. Because 365 days I eat before 6 o'clock, whether Wow. whatever it is. But I'm in bed at 9. After 9, I'm a dead person. They can't. So I think that's how even I started. I sleep early, so then I want to eat early. Yes, yes. I think very good way of looking at it. I was looking at it forward, you're looking at it backwards, but both ways will work. But this, he is inspiring me to do this for the next 1 year, is what I would say. Binduji, I've reached a stage where I'm eating early, by 5:30 max. But sleeping early, I'm still struggling. Trust me. I mean, put on that audio, put off that audios. You know what? If you stay awake after, let's say you eat before 6, and if you stay awake after, let's say 10 or 11, then you'll be hungry again. yeah, it So that's happens. why sleeping early is important with it. It happens, but I try to not eat anything. But yes, I experience those hunger pangs. Yeah. One thing I have found actually is in this last few days was if this was even before the Paryushan, which is why I'm quite convinced it is really like that. So during the Paryushan, every day we would be eating early, like, before sunset thing, and not sunset, whatever the time they give in the Panchang or whatever that word is, Yeah, Panchang. like 48 minutes before the sunset, right? Yeah, 48 minutes before the sunset. So what I found was before the Paryushan, I watch like a TV show, at least 2 episodes of definitely 1 episode, 1 hour worth of TV watching happens, every day. And whenever I watched TV was when I felt like eating. Okay. Now in this Paryushan time, the whole 18 days, I was only doing Swadhyaya and Pravachan even in the night because, night is the only time I watch TV. And I was doing only this. When you do Swadhyaya and Pravachan, there is no desire to eat food because you're so trapped by those words and, following the bhav of it. And I said, you know what? And then Pravachan and this ended right on day before yesterday. And yesterday we saw TV, right? I saw TV and I wanted to eat. You see what I'm saying? So there are 2 things. Go to bed early and don't watch TV. Like the ragi shows. Because I think when you watch things that have rag and all this in it, you tend to do some of these other activities that are not according to Prabhu Agnya, is the other thing I found out. I don't know if anybody else watches TV in this group, but I do watch TV, so I just had to say it. TV or read a storybook, both those things are conducive to doing eating and all this ragi activity, because they say, no, the more ragi things you read and do, the more you want to do them. So less time you spend with them, more time with your Atma, then less you'll do of those other activities, Indriya Vishay Kasha, True. Tulika ji, you want to add something? Sorry. She'll again hit the bullseye. Just one second. No, okay. मतलब एक तो मैंने ना कांजी स्वामी जी के 1-2 सेशन सुनने की कोशिश की है. इतना क्लियर ऑडियोज नहीं रहते हैं, बट उसमें एक जो सेंटेंस उसका एकदम क्लियरली मुझे समझ में आता है, बिकॉज मेरे को इतना गुजराती समझ में नहीं आता है. बोलते पहले तो तू ए नक्की कर कि हूँ आत्मा छू. और वो छू पे इतना स्ट्रेस देते हैं ना,
कि हाँ उनका लेवल ऑफ निर्णय उन्होंने क्या किया रहेगा वो टाइम पे, उसको खाली हम लोग खाली इमेजिन भी नहीं कर सकते, खाली सोच ही सकते हैं कि भाई क्या किया रहेगा उस टाइम पे, कि अपना कंफर्ट जोन छोड़ के जो राइट है वो करें। और अगर अगर हम लोग अभी अपने आप को देखें और अगर हम लोग को अपने आत्मा में जाना है, तो हम लोग जनरली गैप एनालिसिस करते हैं कि अभी हम इधर है तो हमको उधर जाना है, तो हमको क्या क्या करना है। और जैसे ही हम लोग सोचते हैं ना कि क्या क्या करना है, तो उधर ही कर्तृत्व की बुद्धि चालू हो जाती है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बट यहाँ पे ये परिवर्तन में फिर वो एक्सप्लेन होता है कि एक बार जब उन्होंने क्या लेवल का उन्होंने निश्चय किया रहेगा, क्या स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रहा रहेगा, कि वो सब अपने आप हो ही गया। हो ही गया, सहज से हो गया उनका, हम्म। सहज से हो गया। सीमा जी, आपको आप कुछ बोल रहे Yeah, थे, अभी आपकी yes, बात मैंने yes. शायद काट दी। आप भी One बोल second, 1 second. या मेरे को डेफिनेटली ऐड करना था इसमें एक दो पॉइंट जो मुझे यहाँ पकड़ में आया, वो एक तो जब से कांजी स्वामी को मैंने सुना देखा पढ़ा है, वैसे मेरे को भी जैसे तुलिका जी बोल रही थी, इतना गुजराती तो नहीं समझ में आता, बट ये जरूर पता चला कि ज्यादा कम्युनिटी सेटिंग में बहुत ज्यादा अपन वो स्टेडफास्ट हो जाते हैं, तो दैट ऑल लाइक जब अपन स्कूल में पढ़ते थे तब मुझे लगता था उसके कारण ही कम्युनल राइट्स ज्यादा होते हैं। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दोज थिंग्स यू हैव टू यूज योर विवेक टू फाइंड आउट व्हाट इज द राइट थिंग। तो जैसे वीत राग विज्ञान अपना द साइंस ऑफ द सोल, द साइंस ऑफ अध्यात्म, इसमें कुछ कम्युनिटी नहीं है, इट इज द साइंस ऑफ सोल एंड दैट्स व्हाट यू लर्न एंड द मोस्ट ऑफ इट यू फाइंड इन द दिगंबर सेक्ट, राइट। बट कांजी स्वामी जी ने जब ये देखा कि यहाँ पर ये रिचुअलिस्टिक हैबिट्स थी और ये जो प्रैक्टिसेस थी और ये पालन करना पड़ता था स्थानकवासी में, और दिगंबर में ऐसा नहीं है और ये रियल पाथ है ये सब, बट एट द सेम टाइम दिगंबर में आने के बाद भी उन्होंने जो चेंजेस, दिगंबर मान्यता में भी जो गड़बड़ियां थी उसको कैसे खुला किया, वो बहुत ही ऑसम है, इसीलिए वो युग पुरुष हुए। क्योंकि दैट इज नॉट जैसे टोडरमल जी ने किया ना कि छोटी छोटी अपने अंदर के अभिप्राय को पकड़ पकड़ के उस पर चोट पहुंचाई है, सेम वे कांजी स्वामी ने अपन जो सुनते हैं, मैंने भी समय सार पढ़ा नहीं है, पर कांजी स्वामी ने एक एक चीज के अंदर जो क्या उसके अंदर का मीनिंग है खुद अनुभव करके लोगों को बताया है, और जहाँ पे प्रॉब्लम्स है दिगंबर समाज की फॉलोइंग में उसको भी ठीक किया है। तो दो ही अडॉप्टेड इट, ही आल्सो न्यू देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर एग्जिस्टिंग विद इन दिस, और उसको भी बिल्कुल क्लियर खरा सोना अपन को पकड़ा दिया है, मतलब रियल सोल अपने हाथ में। तो इट्स नॉट tainted anymore. If we follow it, we'll get it. That's the conviction I got from the his one words. other thing from this story that also comes to mind is I think we read it in Mokshmark Prakashak or Chhodala, I don't know where even मोक्ष को जाने के लिए कोई अकेले जाने को तैयार नहीं है, उसके लिए भी उसको ग्रुप चाहिए। We read that somewhere. And actually धर्म इज अकेले ही होता है, वो अकेले ही करना है, उन्होंने करके दिखाया कि ये अकेले ही होना है। And I think we got to grasp that and keep moving forwards with our path. And somewhere, I guess, Himalji, everything what we are doing it just by ourselves. It's just that we are under that illusion that everybody is there with us, or we are there for everybody. Yeah, because we are totally always alone. That is true. Yeah, so That is true. exactly. So Right, just a quick definitely. time check. Should we call it an end to the class because we've really overspent our time here? Or Yeah, definitely. And if we want to continue, yes, we can do that as well. I can end the meet recording and then we can chit chat if we want to. We could do that. But what is does somebody want to say the ending prayer today? And we can close the recording. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध
स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना